Just 3 hours from Udaipur rises the second longest wall in the world after the Great Wall of China, the UNESCO listed Kumbhalgarh Fort. For over 600 years, these stones have guarded the valor of Rana Kumbha and echoed the defiance of Maharana Pratap, who was born here. This is not just a fort, it's a living legend, a journey every traveler must take to feel the history breathe. सो फोर्ट पे जाने से पहले हमने सोचा कि लाइक लेट्स हैव सम फूड बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ द नियरेस्ट रेस्टोरेंट एंड होटल टू कुंभलगढ़ फोर्ट. लेट्स गो इन रिसेप्शन एरिया. यहाँ टैरिफ कितना रहता है भैया? 3,000 रुपये. 3,000. सो लाइक दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया. अभी हमने ऑर्डर किया है गट्टे का सब्ज़ी एंड रोटी विद फ्रेश लाइम एंड खींचिया पापड़. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. सो ये यहाँ पे विंडोज़ हैं कुछ. यहाँ से आपका व्यू देख सकते हैं, पहाड़ हैं. ये है स्वीट लाइम. दिस इज़ डिसेंट. एक गर्मी बहुत है एंड लुक्स फ्रेशिंग. और हमारा गट्टे की सब्ज़ी एंड रोटी भी आ गई है. लेट्स सी पहले. हाँ, लेट्स सी हाउ इट इज़. सो दिस वी हैव ऑर्डर्ड खींचिया पापड़. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट लाइक. टमाटर है, सेव है और प्याज है, बूंदी है, कुकुम्बर है, धनिया पाउडर है. सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट लाइक. फाइव ऑन 10. पापड़ काफ़ी ज़्यादा ऑयली है. इसमें गार्लिक बहुत ज़्यादा लगा है. जो फ्रेगरेंस आ रही है जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे. लेट्स सी पहले. एंड यहाँ पे अगर आप फुल्का बोलोगे तो आई मीन बटर रोटी बोलोगे यू गेट तवा रोटी. तो डोंट एक्सपेक्ट यहाँ पे तंदूरी टाइप्स. लेट्स ट्राई. गट्टा इज़ प्रीटी सॉफ्ट. We don't recommend to go for गट्टे का सब्ज़ी and खींचिया पापड़ here in this restaurant. But अगर आप यहाँ आ रहे हैं and you don't have any option to eat, but you can try some other things and share us in the comments like what you tried and how it was. So अभी we are into fort. हमने first gate से enter कर लिए. And the amusing thing about this fort as of now is like even though we have entered the first gate, there is no clue that there is a fort. This is kind of unique things because normally what we see is when we enter a fort, there is a huge building and so okay, there is some toll tax that we have to pay in order to get into this fort. ये कितने का होता है? 50 rupees. 50 rupees. And इसके charges. So this is how it is. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर. 50 rupees entry for one time and this is for only 3 hours. So देखना सर मैजिक होने से फोन देखना. So now the fort will come into the picture. I mean after I think we have crossed like 1 kilometer. Now here you can see the fort. No scope and you cannot see the fort from outside.
you take a you take any 360-degree angle, you will not be able to see the fort, but you can see the fort is just above. So the wall, that is a great wall. You can see 36 kilometers in length. So this is the second wall after the Great Wall of China in terms of length. So this was made by Rana Kumbha. This is the entry of the fort. Oh, here are cars. There are so many cars being parked, and it is summer, maybe like 40 degrees outside, and but there are so many people here. This is the fort entry. Look at the walls. This is the main entrance of ticket ले जाओ. This is the main entrance of Kumbhalgarh Fort. Look at the huge size of the gate. See Paru? Oh, it's so big. We are heading towards Bhavan Devdi temple. It's a giant temple inside the fort. So it is around like 600 meters by walk when you enter this place, this complex. So there are other structures, not sure what exactly they are. This is something called Vedi complex. So we got to know from here, from a local person, that there were 300 Jain temples in the complex of this Kumbhalgarh fort, and all the temples are now closed, and there are no idols inside the temple, so they are closed. But that's a huge number in a single temple to have all these number of Jain temples in a single. All were made under the kinship of Rana Kumbha. So this is Jain temple 1, I think, and that is Jain temple 2, and we are moving towards the third Jain temple, Bhavan Devdi. So Bhavan Devdi का मतलब है like there were like 52 Jain temples. जैसे कि लोकल ने हमें गाइड किया कि like out of 300 यहाँ पे 52 एक साथ थे. So the total length of this particular hike is around 1 kilometer. So आपको if you are athletic and आप normal walk करते हैं तो you should not take like around more than 25 minutes. तो हमको यहाँ पे विद द किड हमें आधा घंटा लगा, तो आधे घंटे में हम पहुँच गए थे. एंड आना जाना एंड टोटल टाइम that we took is around like 1.5 hours. So it's a good excursion outside उदयपुर, अगर आप उदयपुर आते हैं तो. ये सीढ़ियाँ जाती हैं महाराणा प्रताप के बर्थ प्लेस की तरफ. This room is the birthplace of Maharana Pratap. See the long wall. We are at the top of Kumbhalgarh Fort, and this is the highest point. So behind me is the birthplace of Maharana Pratap. The view here is amazing, and the wind is also amazing. It's about to sunset. We might be able to show it to you, but like I'll show you the view of the mountains from here.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।